ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग सर्विस 2006 में पूछा गया ये प्रॉब्लम है। इंक्लाइन ट्यूब, इनिशियली specific gravity 1.25 liquid is poured in the inclined tube, and after that in the inclined tube 7.5 centimeter cube of water extra volume is added in the inclined tube. So due to that the movement of the liquid takes place in the vertical tube also. That vertical height extra increases, means we are named as h2. That h2 we need to calculate in this problem. So how to calculate in this problem? See one by one. We have divided this problem in a two part. First case first. Given as per the given data, initially specific gravity 1.25 liquid is poured in the inclined tube. So this inclined tube having a, in this inclined tube meniscus momentum we are noting as x1 and vertical height in this h1. So apply sin theta is equal to h1 by x1. h1 is equal to x1 sin 30. Sin 30 is 1 by 2. So twice h1 is equal to x1. x1 x2 in terms of x1 related to h1. So put calculate during calculation, calculate in height format. So this is the first step. Now move into the case second part. In the case second, in the part second, what they have told, this is up to this is the initial condition. After they have told in the inclined tube extra 7.5 centimeter cube volume of water is added in this inclined tube. Due to addition of water, this during this is the movement down of the liquid and rising in the vertical height. This rising extra vertical height, this is noted as h2, and this is the extra height, this is the inclined height, this is known as a x2. Now see here, main thing is in that extra volume added in the inclined tube. So this is the volume related thing. So they have given volume. So volume is equal to this small area multiplied by x1 plus x2. This is the inclined length. Area multiplied by x is the volume, because changes or extra volume added in the inclined tube only. So volume is equal to small area multiplied by x1 plus x2. x1 plus x2, volume 7.5, area they have given 0.5 centimeter square. So x1 plus x2 15 centimeter. Remember this value. Now what we need to do in the third step, apply the pressure is equal to equal pressure principle, because this is the atmospheric pressure, here also atmospheric pressure, equal pressure formula. Pressure is equal to rho gh. Now for calculation of pressure we require the vertical height. Here we have by default vertical height h1 plus h2, but here we need to calculate total height with the help of sine formula, because they have given sine 30, this 30. So sine 30 is equal to this total height, see here, this total height divided by hypotenuse x1 plus x2. So h is equal to x1 plus x2 we have calculated 15. So 15 sine 30. So here now apply this equal pressure formula. This rho gh means density of manometric fluid multiplied by g, and this is the height, total height h1 plus h2. Now see this. Now see in density of water, here extra water is added multiplied by g, and total height we have calculated here right now. H is equal to x1 plus x2 sine 30, x1 plus x2 sine 30. G gets cancelled. Density of manometric 1.25, specific gravity given, multiplied by 1000, density h1 plus h2 is equal to density of water 1000, x1 plus x2 we have calculated value here 15 multiplied by sin 30. See हमने जो भी स्टेप यूज़ किया है उसका नेक्स्ट स्टेप में उपयोग है, इसलिए वी आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप. Now
here main task is to calculate h1 plus h2 value. This is the total value we need to calculate here with the help of this equal pressure formula. So h1 plus h2 is the 6 centimeter, means total height here 6 centimeter, but they have asked in the problem movement of the meniscus in vertical tube एक्स्ट्रा, मुझे एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर यहाँ पे ऐड किया तो h2 कितना इंक्रीज हुआ ये पूछा है उन्होंने. वी हैव h1 plus h2 value 6 centimeter. So our task is to calculate h2 value. Here we got from x1 to h1 value. Now अब क्या करें हम, एक्स्ट्रा वैल्यूम जब ऐड किया यहाँ पे तो x2 मूवमेंट हुई, सेम हिसाब से यहाँ पे वर्टिकल हाइट में h2 मूवमेंट हुई, स्मॉल एरिया है. सो वैल्यूम इज इक्वल टू, अब क्या करें देखिए, वैल्यूम इज इक्वल, वैल्यूम 7.5 एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h2 प्लस एरिया मल्टीप्लाइड बाय x2. अब यहाँ पे क्या करें, h2 क्या करना है यहाँ पे 6 माइनस h1, बिकॉज x वैल्यू हियर वी हैव इन h1 फॉर्मेट. कौन सा भी निकालिए, जो भी वैल्यू h1 निकालिए या h2 निकालिए, उसके बाद यहाँ पे पुट करनी है तो h1 और h2 वैल्यू भी निकल जाएगी. सो 7.5 स्मॉल एरिया 0.5 दिया हुआ h2 वैल्यू, h2 मीन्स 6 माइनस h1 वी हैव पुट हियर आता है. अब स्मॉल एरिया मल्टीप्लाई बाई x2. अब x2 क्या है यहाँ पे 15 माइनस x1, राइट, x1 प्लस x2 15 है. सो x2 इज इक्वल टू 15 माइनस x1 हमने निकाला है इन टर्म्स ऑफ h1. सो 15 माइनस ट्वाइस h1. अब इस वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 7.5 0.5, h2 की वैल्यू 6 माइनस h1 पुट किए वहाँ हमने यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू 15 माइनस ट्वाइस h1 पुट हियर. वी गॉट हियर h1 2 सेंटीमीटर, बट दे आर आस्किंग टू फाइंड द h2. जब वाटर ऐड किया है इंक्लाइन ट्यूब पे तब वर्टिकल जो ट्यूब है उसमें कितना इंक्रीज हुआ वाटर हाइट, कितना इंक्रीज हुआ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, वो उन्होंने पूछा है. सो वी हैव द रिलेशन h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. हियर h1 वैल्यू वी गॉट हियर 2. सो पुट हियर 2 वैल्यू, h1 की वैल्यू 2 पुट करनी है तो h2 इज इक्वल टू 6 माइनस h1 हो जाएगा, h2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी. दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. मैं फुल इमेज में आपको दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें. ये देखो, ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में 2006 में पूछा गया था. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये.